We will speak from the 5th chapter of Bhagavad Gita. It's a famous verse, 22nd verse of the 5th chapter of Bhagavad Gita. 22. 5:22. Yehi samsparshaja bhoga dukkhayo naya evate adyantavantah kaunteya nateshu ramate buddha yehi samsparshaja bhoga dukkhayo naya evate adyantavantah kaunteya nateshu ramate buddha yehi samsparshaja bhoga dukkhayo naya evate adyantavantah kaunteya nateshu ramate buddha ye those he certainly samsparshaja by contact with the material senses bhogaha enjoyments dukkha distress yonayaha sources of eva certainly te they are adi beginning anta end vantaha subject to kaunteya o son of Kunti na never teshu in those ramate takes delight buddha the intelligent person. Translation. An intelligent person doesn't take part in the sources of misery which are due to contact with the material senses. You will have to translate? Yeah. Okay. बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं. O son of Kunti, such pleasures have beginning and end, and so the wise man does not delight in them. हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता. चतुर व्यक्ति उनमें नहीं आनंद लेता है. Purport: material sense pleasures are due to the contact of the material senses which are all temporary because the body itself is temporary. भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है. A liberated soul is not interested in anything which is temporary. मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता. Knowing well the joys of transcendental pleasure, how can a liberated soul agree to enjoy false pleasures? दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत व भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा. In the Padma Purana it is said, पद्म पुराण में कहा गया है, Ramante yoginanante satyananda chidatmani iti rama padena so param brahma vidhyate. The mystics derive unlimited transcendental pleasure from the absolute truth, and therefore the supreme absolute truth, the personality of Godhead, is also known as Rama. योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है. In the Srimad Bhagavatam also it is said, श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, Nayam deho deha bhajam nriloki kashtam kaman arhate vid bhujam ye tapo divyam putrakayena sattvam shudyatya smad brahma sokyam tvanantam. My dear sons, there is no reason to labor very hard for sense pleasures, while in this human form of life,
Such pleasures are available to the stool-eaters, hawks. Rather, you should undergo penances in this life by which your existence will be purified. As a result, you will be able to enjoy unlimited transcendental bliss. हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। ये सही बात है। Therefore, those who are true yogis or learned transcendentalists are not attracted by sense pleasures which are the causes of continuous material existence. अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। The more one is addicted to the material pleasures, the more he is entrapped by material miseries. जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतना ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। Srila Prabhupada ki yehi samsparshaja bhoga dukha yone evate adyantavantah kaunteya nate suramate buddha. An intelligent person does not take part in the sources of misery which are due to the contact with the material senses. So, son of Kunti, such pleasures have beginning and end, and so the wise man does not delight in them. श्लोक का अनुवाद फिर से। बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यादेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजानुलंबित भुजौकनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारम्। यन्तः प्रवेश्य मम वाचिमं प्रसुप्तं सञ्जीवयात किल शक्तिधरः स्वदं नन्यं सहस्रचरणा श्रवणात् वागादिं प्रणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। So I decided to speak a little bit on this verse because I was told that last week the topic was the spiritual solution for material problems. महाराज ने इस श्लोक में आज कुछ चर्चा करने का निर्णय इसलिए लिया कि हमने उनको बताया कि पिछले सप्ताह महाविष्णु गोस्वामी महाराज ने एक विशेष विषय पे चर्चा की थी, वो है आध्यात्मिक भौतिक दुखों का आध्यात्मिक समाधान। So my particular topic will be the root of all material problems. तो महाराज का आज विशेष विषय होगा कि सभी दुखों का मूल कारण क्या है। Because one thing is to solve material problems by spiritual means. Another thing is not to get any problems, not to get into material problems. एक तरफ है कि हम अपने भौतिक दुखों का, समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक विषय से करें, और दूसरा होता है हम भौतिक दुखों में उलझे ही नहीं, भौतिक दुख आए ही नहीं हमारे पास। In this particular verse, Shri Krishna is explaining the root cause of all our problems. और इस आज के इस श्लोक में कृष्ण भगवान कृष्ण विशेष रूप से बता रहे हैं कि जो मूल कारण हमारे दुखों का क्या है। He specifically says that the root cause of all our problems is our infatuation, our complete madness about the material sense pleasures. तो इसमें कारण बता रहे हैं भगवान कि हमारे दुखों का कारण है ये पागलपन और हमारा भ्रम। We all want happiness. That's natural. हम सब सुख की खोज में हैं, ये स्वाभाविक है।
the goal of every human endeavors to become happy. हर प्राणी, हर मनुष्य का लक्ष्य होता है कि हम प्रसन्न रहें, खुश रहें. But the main problem is that we are trying to find happiness in material sense pleasures. We somehow or other in our mind equate happiness with the material pleasures. तो लेकिन प्रॉब्लम हमारा समस्या ये है कि हम उस सुख की तलाश हम भौतिक इंद्रियों के माध्यम से लेना चाहते हैं और इस पे ये भ्रम है हमारा. Whereas here Krishna very clearly says that in reality the sense pleasure, he some sparshaja bhoga, the pleasures which we get from the contact of the senses with the object of the senses, dukkha yona evate, is the source of miseries. जबकि यहाँ स्पष्ट भगवान समझाते हैं कि हम जो इंद्रियों का सुख इंद्रिय विषय के संसर्ग से हम लेना चाहते हैं, वही हमारे दुख का कारण बनता है. And it's very difficult truth to understand because we're all sentimentally or emotionally attached to our concept of happiness. लेकिन ये समझना बहुत कठिन है क्योंकि हम अपनी भावुकता के कारण, हमारे अज्ञान के कारण हम इंद्रिय सुख के पीछे आसक्त हैं बहुत ज़्यादा. So because of this asakti, because of this attachment to our concept of happiness, we have all the problems and we create all the problems and all the sufferings to ourselves. तो इस भ्रम के साथ जो हमारी आसक्ति है कि हमारे इंद्रिय विषय ही हमको इंद्रिय सुख दे सकते हैं, हमारे सारे समस्याओं का कारण बन जाती है. And if we take the global situation and analyze very carefully, we will see that all the global problems which are there just because of this wrong concept of happiness. ये पूरे विश्व के जो दुखों का कारण हम देखेंगे, यही एक कारण है. People, because of the understanding that they will be happy because of sense pleasure, they develop a lot of greed. तो लोगों के अंदर जो ये भ्रम है कि हम इंद्रिय सुख से ही हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो इससे लालच भी बढ़ जाती है. And because of this greed, because of this lobha, which is there in the heart, there are unlimited problems, ecological problems, international problems, and all kinds of problems are there. तो ये जो सब सारी समस्या इस लोभ के कारण ही आती हैं. इसके इकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि वातावरण प्रदूषण और दूसरी समस्याएं सब इसी के कारण आती हैं. So what I want to do, I want just to analyze this statement of Krishna that material sense pleasure is actually source of unhappiness, of miseries. Dukkha yona evate, yahi samsparshaja bhuga dukkha yona evate. तो आज महाराज इस विषय के ऊपर विश्लेषण करके हमको समझाएंगे, हमको विश्वास दिलाएंगे कि ये इंद्रियों का सुख ही हमारे दुखों का कारण है. I'm coming from a cold country. महाराज एक ठंडे मुल्क से आते हैं, where there is very cold weather. जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है. And for all those who live there, to be in a nice sunny day in Dubai is a great pleasure. और वहाँ के लोगों के लिए एक सूर्य से चमकता हुआ कोई दिन हो ना, जहाँ गर्मी हो, अच्छा लगता है, उनके लिए बहुत आनंददायक है. But for those who live in Dubai under the bright sun of this desert, too much sun is not a pleasure. लेकिन इस रेगिस्तान में रहने वाले चमकते हुए सूरज के जो हमेशा रहते हैं, उनके लिए ज़्यादा सूर्य का प्रकाश जो है दुखदायी है. On the way here, we were driving in a car, and somebody wanted to please me. He said that you came from a cold country, therefore I should turn on AC. आज महाराज इस गाड़ी में जा रहे थे तो गाड़ी का ड्राइवर ने तो खुश करने के लिए बोला, आप ठंडे मुल्क से आए हो तो मैं आपके लिए एसी चालू कर रहा हूँ. But to please somebody who is coming from cold country, you should turn on heater, not AC. लेकिन कोई जो ठंडे मुल्क से आता है उसको अगर खुश करना हो तो उनको हीटर ऑन करना पड़ेगा, ये कंडीशन नहीं. So what I want to say
is that actually the happiness, so-called material happiness from the senses, is very relative. ये महाराज क्या कहना चाहते हैं कि ये जो तथाकथित इंद्रिय सुख है ये रिलेटिव है, मतलब क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, एक संबंध, एक तुलनात्मक सुख है, नहीं बोल सकते ना, तुलनात्मक है। Because in reality, to experience some happiness from these sense pleasures, you first have to experience some unhappiness. वास्तविकता ये है कि इंद्रियों से सुख प्राप्त करने के लिए पहले इंद्रियों से दुख भोगना पड़ेगा। To experience happiness from food, what is the condition to have pleasure from food? Yeah. महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर हमको खाने की वस्तु से अगर हमको सुख प्राप्त करना हो तो उसके लिए क्या आवश्यक है? भूख। पेट में भूख का दर्द होना चाहिए। If you are not hungry, if you don't have this hunger, then the food will not bring you pleasure, right? मतलब महाराज कह रहे हैं कि अगर आपके पेट में भूख नहीं है तो जो खाने की वस्तु आपको सुख नहीं दे सकती। So without miseries you cannot get happiness, right? बिना दुख के आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते। You know, if I am not cold, I will not get pleasure from heat. अगर मैं ठंडा नहीं हूँ तो मेरे को गर्मी से आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। But if I am very cold, heat is very pleasurable. लेकिन मैं अगर ठंड में हूँ तो मेरे को गर्मी अच्छी लगेगी। And whatever sort of happiness we will take, if we analyze it very carefully, we will understand that in the beginning there is some unhappiness, and then somehow or other, by some material means, we neutralize this unhappiness, this tension in the brain, in our mind, and when we neutralize this unhappiness or tension, we feel, oh, this is so nice. तो अगर आप इसको ध्यान से समझने की चेष्टा करें कि सुख प्राप्त करने के लिए पहले हमको दुख से गुजरना पड़ता है, अपने मन के अंदर, फिर उस सुख की तलाश होगी, फिर जब उसको थोड़ी देर के लिए हम सुख प्राप्त करके उसके विपरीत जाकर के सुख प्राप्त करके उसको मिटाते हैं, हमको अच्छा लगता है। For example, when people play some game, some sports, or whatever sports is there, and when they win, they experience a lot of happiness. उदाहरण के तौर पे अगर कोई खिलाड़ी कोई खेल के करता है और वो जीत करके विजय प्राप्त करके बहुत प्रसन्न खुश होता है। You can see these football players or cricket players when their team wins and they are so joyful. Yeah, they embrace each other. They're so happy. क्रिकेट और फुटबॉल में भी हम देखते हैं जब उनकी टीम जीत जाती है तो बहुत खुशियां मनाते हैं। Why they are happy? वो खुश क्यों होते हैं? Because they were so unhappy before. क्योंकि वो पहले बहुत दुखी थे। Because they were so tense before. What's going to happen? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टेंशन था कि क्या होने वाला है। If they were not, if they were just playing and, it doesn't matter, just let's play, they would not be happy because they would win. अगर कैसे खाली खेलते जीतने के हिसाब से नहीं तो उनको जीतने के बाद उतनी खुशी नहीं होती। But before they were so tense and what's going to happen, we should play very nicely and then they will pay something and then, because tension is gone, they win. Oh, very nice, very good. तो ये टेंशन बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर के चिंता लेकर के कि क्या होगा, कैसे खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, हम कैसे जीतेंगे, इससे गुजरने के बाद जब वो खेल खेलते हैं और जीतते हैं तब वो खुश होते हैं। In reality, Krishna explains very clearly in Bhagavad Gita that happiness, this experience of happiness, of sukh, manka sukh, it's coming from sattva gun, from sattvic state of mind. भगवान आपको समझाते हैं ये जो इंद्रिय सुख जो प्राप्त करते हैं वो हमारे मन की सात्विक स्थिति से उत्पन्न होता है। When this sattvic state of mind is there, the mind is calm, the mind is very light and very nice, then we feel its happiness. हमारा मन जब सात्विक हो जाता है, शांत हो जाता है, तब हम सुख का अनुभव कर सकते हैं।
But we cannot. We experience this state of mind after we get relief from a lot of tension. When the tension is there and we relieved, then we think, oh, very nice, very nice. तो जो कि टेंशन होता है और टेंशन उतर जाता है तब हमको लगता है ये अच्छा है, बहुत हमको खुशी मिल रही है. So in reality, this sort of material happiness is not happiness, it's just relief of tension, relief of miseries. तो ये तथाकथित सुख, इसकी वास्तविकता ये है कि ये कोई सुख अपने में नहीं है. हमको दुख में से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं तब हम इसको सुख की तरह देखते हैं. In a similar way, people, they have some desire. They want to buy a car or they want to build a house, and it's a big desire and they work very hard, right? एक और उदाहरण महाराज कहते, किसी के मन में बहुत इच्छा है, ज्वलंत इच्छा कि मैं कोई गाड़ी खरीदूं, मैं कोई अपने लिए घर मकान बनवाऊं. And then they finally get the car. और अंत में उनको गाड़ी मिल जाती है. Nice Mercedes car. मर्सिडीज अच्छी गाड़ी मिल जाती है. Yeah. Now, for how long they will be happy? तब कितने समय तक वो खुश रह सकते हैं? At best 5 days. ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन. If this Mercedes car would be the source of happiness, why would it not bring them happiness after 1 month? It never brings happiness after 1 month. अगर ये गाड़ी सुख का साधन है तो 1 महीने के बाद सुख क्यों नहीं मिलता उससे? The experience of happiness is just because they had such a strong desire and now finally desire is released and they are happy. तो ये सुख प्राप्त करने का कारण ये कि इसके अंदर जो इच्छा थी, क्या जो टेंशन था एक तरह से, वो जो प्राप्त हो जाता है तब थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है. But if they didn't have this desire, they would be happy without Mercedes car, no problem. अगर ये इच्छा का टेंशन जैसे नहीं होता तो बिना गाड़ी के वो खुश रह सकते. So again, we should very clearly understand that this is just a game of mind. It's a game of mind. This so-called happiness is just illusion. तो हमको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा कि ये हमारे मन का खेल है. People, they think that they will become happy if they realize or achieve some desire, but when desire is there, they still feel no, happiness is not there, and they again set another goal and another desire builds up and tension builds up, and then for a few days they're happy because tension is gone when they achieve this desire, but then the same thing starts again, no happiness. देखा जाता है कि ये तथाकथित सुख हमको थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, फिर हम धीरे-धीरे उस सुख को भूल जाते हैं, फिर हमारे लिए कुछ और इच्छाएं आ जाती है, फिर उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए हम टेंशन देते हैं, फिर उस टेंशन से जब हमको मुक्त होते हैं, फिर हम थोड़ी देर के लिए खुशी प्राप्त करते हैं. चलता रहता है. I have a devotee friend. He is a professional psychologist. महाराज कहते हैं कि इनका मित्र है, डिवोटी मित्र है, जो साइकोलॉजिस्ट है. And he has a lot of people who come to him for some psychological problem, for consultations, to get relief from tension or from stress. मानसिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए वो विशेष वो वैज्ञानिक है और लोग उनके पास आते हैं समाधान के लिए. And he once told me that the amazing thing is that in general, poor people are more happy than the rich people. तो वो अपने अनुभव बता रहे थे कि भाई उसका अनुभव ये था डॉक्टर का कि जो गरीब लोग हैं वो अमीर लोगों की तुलना में ज्यादा खुश हैं. And he said the reason is very simple, because poor people they still have hope that they will become happy when they become rich. उसका कारण ये बताते हैं कि एक कारण है कि वो गरीब लोग उनके मन में एक आशा होती है कि आगे चल के वो अमीर बनके सुख प्राप्त करेंगे, खुश रहेंगे. And अमीर लोग इस आशा but rich people, they don't have this hope anymore. लेकिन अमीर लोगों को इस प्रकार की कोई आशा नहीं होती. Because they know they didn't become happy. वो जानते हैं कि वो कभी खुश हुए नहीं थे. So in fact, this so-called material happiness is not just happiness, it's just hope for happiness. तो ये तथाकथित भौतिक सुख वो सुख नहीं है, एक सुख की आशा है. And
if, for example, those people who have this conception that my happiness will only be there when all my desires fulfilled, just let them imagine that all of a sudden all your desires fulfilled, and then for the rest of eternity, whatever desire you have, it immediately will be fulfilled. People will be horrified by this prospect. महाराज कहते हैं कि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा इच्छाएं वो पूरी नहीं हो रही, अगर एक बार उसको समझाया जाए, वो समझ ले कि मेरी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, तो और भी जो इच्छा आने वाली है वो भी पूर्ण हो जाएंगी, तो इस प्रकार के अवस्था में वो सुखी कभी नहीं रह पाएगा. These people will be bored. वो बिल्कुल बोर हो जाएंगे. This is how, you know, sometimes rich people are very bored because they don't know what to do now. कभी-कभी आप धनवान लोगों को देखेंगे वो बोर हो जाते हैं, उनको मालूम नहीं अब क्या करना हमें चाहिए. Whatever they want is there, and you know it's still, they're not still happy. जो उनको चाहिए वो सब कुछ उनके पास है, फिर भी वो खुश नहीं है. So that's only one problem with this so-called material happiness, because it's very intertwined, it's very interconnected with unhappiness, with suffering. ये प्रॉब्लम है भौतिक सुखों का. वो भौतिक सुख हमेशा दुखों के साथ बुने हुए रहते हैं. In fact, this is just two sides of one coin. One is sukha, another one is dukkha. वास्तविकता तो ये है कि ये सिक्के के दो पहलू हैं, दो साइड हैं, कि एक तरफ दुख और एक तरफ सुख. And if we waste our whole life by trying to get this happiness, we ultimately will always bring unhappiness to ourselves. और अपना जीवन हम इसके पीछे लगा दें कि हम अगर सुख प्राप्त करें तो हम अपने पास दुख ही लेके आएंगे. You know, if sukha is coming from through this door, then it means that dukkha is following sukha. मान लो अगर इस दरवाजे से, इस द्वार से सुख अंदर आ रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि उसके पीछे दुख भी आ रहा है. There is Russian saying, very nice Russian saying, if now you are laughing so hard, it means that very soon you will be crying in the same way. तो रशिया में, रूस में एक कहावत है कि अगर आप अभी बहुत ज्यादा हंस रहे हो, मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा रोगे आप आगे चल के. So we have to really understand that this is the same thing, sukha dukkha, sukha dukkha. There is no much difference. Okay, yeah. We have to understand this. हम लोगों को ये समझना होगा, ये सुख और दुख दोनों एक साथ है और अलग नहीं. In Srimad Bhagavatam, there is this story about Maharaja Chitraketu. महाराज चित्रकेतु की कथा भागवत में आती है. And we know he was very much eager to get son. To get a son. Association. तो वो बहुत. No, son, putra. तो वो महाराज जो है बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि उनको एक पुत्र पैदा हो. He had so many wives, but somehow or other, none of the wife could give birth to a child. उनकी बहुत पत्नियां थी महाराज चित्रकेतु के, मगर उनको कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं. And he was so unhappy, so miserable, and he just wanted to have son. वो इतना दुखी था कि वो बस उसकी एक ही इच्छा थी कि मेरे. And ultimately, Narada Muni and Parvat Muni came to him, and he asked them, please fulfill my desire. I only have one desire. नारद मुनि और पर्वत मुनि जब उसके पास आते हैं तो उनसे विनती करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरे को और सब कुछ है, खाली एक पुत्र की आशीर्वाद दे बस. But then said, it's not within your karma, but if you really want, we will give you blessings. You will get the son. उन्होंने कहा भी तुम्हारे इसमें लिखा नहीं है, पर फिर भी हम आशीर्वाद देते हैं, तुमको एक पुत्र होगा. But his name will be Harsha Ashoka. उसका नाम होगा हर्ष अशोक. Not Harsha Ashoka, but Harsha Shoka. हर्ष शोक. So it means that he will bring you immense pleasure. Harsha. इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा वो खुशी देगा. But the same, he will also be cause of immense misery for you.
लेकिन साथ साथ वो आपके दुखों का भी कारण बनेगा, Shoka. शोक का। So, but if we analyze it very carefully, whatever brings us the most happiness, the same will be the cause of most miseries to us. The exactly same, not anything else. हम अगर ठीक से इसको विश्लेषण करके समझेंगे, जो वस्तु आपको बहुत ज्यादा सुख देने के लिए आती है, तो वो सबसे ज्यादा दुख भी आपको देगी। So that's the law of nature. ये कुदरत का कानून है। And Krishna gives another reason here. First of all, he says, Dukkha yona evata, this samsparshaja bhoga is the source of unhappiness. That's one reason. Then, second of all, he says, why wise people don't enjoy this sort of happiness? Because atyantavanta kontaya, they have beginning and end. This experiences have beginning and end. हम भगवान इस श्लोक में दो बातें समझाते हैं। पहला तो ये है कि वो सुख के साथ वो दुख भी आता है, और दूसरा ये जो सुख है वो भी क्षणिक होता है। Even if you have all your desires fulfilled, even if your situation is very ideal, your family, everything is happy, still you always feel someday it will end. आपके पास सब प्रकार के सुख हैं और सुख ले रहे हैं, तो भी आपके मन में ये जरूर आएगा कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। And because it will end, it brings you unhappiness while you're happy. तो वो खुशी मनाते मनाते जब ये विचार आता है कि एक दिन ये अंत होने वाला है, तो उसके साथ साथ अंदर एक दुख भी होता है। Because we all know it will end. You know, even if you have everything nice, sooner or later some changes will happen and it will end. आपके पास सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आपको ये ठीक से मालूम है कि आज नहीं तो कल ये खत्म होने वाला है। Krishna explains in Bhagavad Gita that because these three modes of material nature are always competing for the supremacy, you know, even if the situation is nice, the other mode, the Rajagun or Tamagun, is already waiting to destroy this. भगवद गीता में ये भी समझाते हैं भगवान की तीन जो गुण हैं, हमारे प्रकृति के तीन गुण, वो एक दूसरे के ऊपर हावी होने की हमेशा उनकी स्पर्धा चलती रहती है। जब सत्वगुण होता है तो फिर तमोगुण रजोगुण उसके ऊपर हावी होते हैं। So we have to be very clear that material happiness is not real happiness. It's not real happiness. तो हमें अभी पूरी तरह समझना होगा ठीक से कि भौतिक सुख ये सुख है ही नहीं। And therefore Krishna says, Nateshu ramate buddha, if you have some intelligence, you will not strive for this sort of happiness. भगवान समझाते हैं अगर आप बुद्धिमान हो तो इस प्रकार के सुख के पीछे व्यर्थ समय नहीं लगाओगे आप। It doesn't mean that you will not try to make your material situation nice. It's kind of implied that you will try to do something nice, but you will not invest all your hopes in this illusory material happiness. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सुख है आएगा या सुख के पीछे आप चेष्टा नहीं करोगे, लेकिन आप अपनी पूरी शक्ति, पूरा ध्यान, पूरा समय इसके पीछे बर्बाद नहीं करोगे। You will not think that material happiness is all in all, that there is nothing else but this. आप ये नहीं कह सकते भौतिक सुख ही सब कुछ है अपने में, इसके सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हम कह सकते। You will strive for something higher. आप हमेशा इससे ऊंची की तलाश में चेष्टा में रहोगे। Like Srila Prabhupada in one lecture, he says that actually whatever is supposed to come to us, to happen with us, is more or less it's already guaranteed. It will come. It will come. श्रील प्रभुपाद उनको समझाते हैं जो आपके जीवन में घटना होने वाली है वो घटेगी ही। It is said in Niti Shastra, it is said that 5 things are written on your forehead. नीति शास्त्र बताते हैं कि आपके 5 चीजें आपके तकदीर में लिखी हुई हैं भाग्य में। And if somebody can read, he can look on your forehead and will say, you will have so much money and you will have such a long life and you will have this sort of education. तो कोई अगर हमारे मस्तिष्क में लिखी हुई भाग्य को पढ़ सके तो बता सकता है कि आपके अंदर
आपके जीवन में कौन सा सुख आने वाला है, कितनी पढ़ाई आप करोगे, कितना दुख और कितना सुख आप। And even if you try very hard, you will not get more money than you deserve to get. और अगर आप बहुत ज़्यादा चेष्टा भी कर लें तो भी आपके भाग्य से ज़्यादा आप नहीं पा सकते। And if you deserve to have a lot of money, you will get it. Even if you don't work too hard, you will still get it. और आप भाग्यशाली हैं ज़्यादा धन कमाने के लिए, तो आप बिना ज़्यादा चेष्टा के भी आप जरूर कमाओगे। It's more or less already predestined by your previous actions. थोड़ा या ज़्यादा ये आपके पिछले कर्मों से पहले से निर्धारित हो चुका है। Good astrologer can look in your chart and will say, yeah, right, your second house is okay, so you will have a lot of money. तो कोई अच्छा ज्योतिषी अगर आपके कुंडली को पढ़ के बता सकता है कि दूसरा घर ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। It's also interesting, I study little astrology, and second house is for money. I will tell you a little secret. महाराज ने थोड़ा ज्योतिष शास्त्र को पढ़ा है और जानते हैं कि दूसरा घर जो है वो धन के लिए। It's an amazing paradox. Usually good planets like Jupiter, if they are in a house, they will bring some good things according to this house. ये एक अजीब बात है कि जो बड़े-बड़े ग्रह अगर दूसरे नंबर ग्रह में आते हैं तो सब अच्छी शुभ बातें ले आते हैं। Yeah, if Guru or Mercury or Shukra is there, then the good things will come in this house. गुरु शुक्र और मंगल अगर है तो लेके आएगा सब अच्छी चीज। But in case of second house, money, the house of your money, if good planet is there, you will not get money. It's vice versa. You have to have bad planet in this house, then you will get a lot of money. जो अशुभ ग्रह आपके दूसरे नंबर घर में अगर आ गए तो आपको धन मिलेगा, और शुभ ग्रह आपके दूसरे घर में आ गए तो धन नहीं मिलेगा। You think a little bit about this. It has a lot of philosophy behind. इसके पीछे बहुत विज्ञान है। Money is not always actually good luck. It's not always a fortune. It's not, you shouldn't think that, somebody that if you're fortunate then you will have money. Good planets, they don't bring money. तो ये हमें किसे समझना होगा कि ये जो शुभ ग्रह हैं कभी धन नहीं ले आते, और धन का होना ही शुभ नहीं है। I once speak with Alfred Ford, Ambarish Prabhu, the disciple of Srila Prabhupada, who is coming from this rich family, rich background, from Ford's family. तो महाराज अम्बरीश प्रभु से मेरे जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं और फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, उस घराने से आते हैं, दुबई भी आ चुके हैं, सब जानते हैं। And he told me amazing thing. He said to me that this energy which is there in the wealth, in big money, is so dangerous. I've seen many examples how it totally destroyed people's lives. तो अम्बरीश प्रभु बता रहे थे कि इस धन के अंदर जो ऊर्जा है उसने उसको देखा है कि किस प्रकार ये सबको नाश कर देती है। If somebody is born in this very rich background, it's very difficult situation, very difficult. तो कोई अगर धनी परिवार में जन्म लेता है तो उसकी जो अवस्था है बहुत गंभीर है। But in any case, what we are trying to understand here is that yes, we definitely, we should have nice life, proper life. That's not a problem. But we shouldn't think that this is the most important thing in the world. ठीक है, हमारे जीवन के अंदर घर के अंदर सुख हो, साधन हो, पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यही सब कुछ है। There is something more than just material happiness. इस भौतिक सुख ऊपर भी बहुत कुछ है। And therefore, in previous verse, Shri Krishna explained this truth. इससे पहले वाले श्लोक में कृष्ण इस सत्य को समझाते हैं। He says in the previous verse that liberated person is not attached to material sense pleasures, but always in trance, enjoying pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness,
for he concentrates on the Supreme. So Sri Krishna is explaining that there are two types of happiness, not just one type of happiness. भगवान समझाते हैं इसमें दो प्रकार के सुख हैं. It was 21, yeah, the previous verse. इससे पहले वाले 5वें अध्याय के 21वें नंबर श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद को समझाते हैं. Which was the line? Verse? Yeah. Which line of the Prabhupada? Just translation. You can. ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है. इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होगा. Specifically, Shri Krishna says, Sukham akshayam ashnute. He is enjoying akshaya sukh, unending or inexhaustible sukh. Sukham akshayam ashnute. तो कभी न खत्म होने वाला सुख और आनंद वो लोग प्राप्त करते हैं. कृष्ण बताते हैं. Anyway, so there are some astrological signs that I have to finish my lecture, so I will finish it now. I just wanted to repeat this point that there are two types of happiness, and if one is really intelligent, he has to analyze the nature of material happiness and try to strive for some higher sort of happiness. दो प्रकार के सुख हैं, तो हमको भगवद गीता बताती है कि हमें जो ऊंचा सुख है उसके पीछे भागना चाहिए. And the second type of happiness, which is coming from within, the happiness from the soul, is actually the happiness which everyone can get and everyone is entitled for. जो दूसरे प्रकार का सुख जो आंतरिक सुख है, जो अंदर से हमको मिलता है आनंद, वो सबका अधिकार उसके ऊपर और सभी लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं. And therefore, Srila Prabhupada, he quotes this very famous verse from the 5th canto of Srimad Bhagavatam, Sudhyat yasmat brahma sukyam tvanantam, that a really intelligent person, he is trying to get Brahma Sukha, the spiritual happiness, which is unlimited, to anantam. Yeah, Sudhyat yasmat brahma sukyam tvanantam. He is trying to get the unlimited spiritual happiness. वो जो आत्मसंयमी है वो अनंत सुख प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं. And this spiritual happiness ultimately is coming when our mind is cleansed and we are in contact with our soul. ये जो आंतरिक सुख हमें तब प्राप्त होगा जब स्वच्छ हो जाएंगे और अपने आत्मा के साथ हम संबंध. Because at this moment we cannot really feel or get the awareness of the pleasure of the soul due to disturbed mind which we have. तो हमारे विचलित मन की अवस्था में हम आत्मा का सुख क्या है उसका हम अनुभव नहीं कर सकते. And when the mind is somewhat pacified, we will feel the pleasure of the soul, the innate pleasure of the soul. तो जब मन को हम शांत करेंगे, संयम में ले आएंगे, तभी हम आत्मा के सुख का अनुभव कर सकते हैं. But this is not even the highest type of happiness, because there is even higher type of happiness. इसके ये जो सुख बताया, ये भी सबसे उच्चतर आनंद या सुख नहीं है, इसके ऊपर भी एक ऊंचा आनंद है. Which is coming when we come in contact with the source of all happiness, of all ananda, the Supreme Personality of Godhead, Krishna. और वो जो सर्वोपरि सुख है वो हमें तब प्राप्त होगा जब हम सबके आधार जो कृष्ण भगवान हैं, जो सारे सुखों के रिजर्वायर हैं. Therefore, as Srila Prabhupada explains, therefore the name of God is Ram. इसलिए श्रील प्रभुपाद समझाते हैं भगवान का नाम राम है. Because Ram means immense pleasure, immense happiness. क्योंकि राम शब्द का मतलब है कि बहुत ज्यादा आनंद. So if you are in contact with Ram, you are also very happy.
अगर आप राम के साथ अगर संपर्क में हैं तो आप हमेशा आनंद में रहेंगे. And if you are separated with Ram, no matter how much money you have, you will not be happy. और अगर आप राम से बिछड़े हुए हैं तो आपके पास जितना भी चाहे धन हो, आप कभी सुखी नहीं रह सकते. You will be very unhappy because you are far away from Ram. आप हमेशा दुखी रहोगे, बहुत ज्यादा दुखी रहोगे अगर आप तो राम से दूर रहोगे. Therefore, we all chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and sincerely try to call Ram in our life. हमेशा ये महामंत्र का जप करते हैं और बहुत हम कोशिश करते हैं कि राम को अपने जीवन में ले आएं. Unfortunately, as Sridhar Maharaj, late Sridhar Maharaj once said, he said, sometimes devotees, when they chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, they mean Hare dollar, dollar, Hare Hare, Hare euro, euro, Hare Hare. It's a different version of the same Mahamantra. So unfortunately, when people chant this, they mean the other version of this mantra, another anuvad. So, but in reality, when we call Krishna and Ram and Hari, we should call them, not their energy or not any other things which may come with them. Krishna, Ram और हरे को पुकारते हैं तो उनको ही याद करें, उनका नाम लेके किसी और चीज के लिए हम लालच न रखें. Right? If they come, we will be happy. Thank you very much. अगर वो लोग आ गए तो हम हमेशा खुश रहेंगे, आनंद रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. जय हिंद भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज. अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो हाथ उठा के या खड़े होके पूछ सकता है. Sir, when world will you finish? When world will you finish? ये दुनिया कब खत्म होगी? In 423,000 years from now. Yes. So it's long time. सुनिए महाराज ने बताया 423,000 साल के बाद ये दुनिया खत्म होगी, जब कलयुग समाप्त होगा. See, in the 12th canto of Srimad Bhagavatam, it is said that actually the destruction of this world is continuous. But the Brahma Kumar is saying the 5,000 years already finished this one. Anytime Satya will restart. No. पहले महाराज का अनुवाद करने दीजिए हमको. That Brahma Kumari said that in 5,000 years, very soon Satya Yuga will start. No, we will have to wait for Satya Yuga a little bit more. Too much. Satya Yuga is the state where Sattva Gun is predominant. सत्य योगा का मतलब है जहाँ पे सत्व गुण प्रधान है. And it's not arbitrary when it starts, because there are certain astrological signs and certain, things should take place. So it will take a long time before it starts. But you can bring Satya Yuga in your heart already now. तो महाराज अभी ऊपर में बता रहे हैं कि ये सत्युग जब आएगा तो ऐसे नहीं आएगा, उसके बहुत से सामने हमको लक्षण दिखते हैं. ज्योतिष शास्त्र की गणना के हिसाब से भी बहुत कुछ बदलेगा, उसके बाद सत्युग आएगा. लेकिन हम अपने जीवन में अभी सत्युग ला सकते हैं. Yeah, because Satya Yuga means predominance of Sattva Gun. If you live Sattvic life, you are in Satya Yuga. सत्युग का मतलब है कि सत्व गुण की प्रधानता. अगर आपके जीवन में सत्व गुण प्रधान है तो आप सत्युग में जी रहे हैं. So don't wait for
Satya Yuga just started now. तो सत्ययुग का इंतजार न करें, आप अभी से अपने जीवन में सत्ययुग ला सकते हैं। Like, I'm coming from Russia, and in Russia, initially they wanted to have communism all over the world. महाराज रूस से आ रहे हैं और रूस में अगर देखा शुरू में हो जाते थे कि कम्युनिज्म पूरे देश में हो। That was the idea of Lenin, that ultimately the whole world will become one communistic state. लेनिन करके एक लीडर था पॉलिटिकल, तो वो इस प्रकार के विचारधारा रखता था कि पूरे विश्व में या कम से कम पूरे रूस में ये कम्युनिज्म को लाया। But then they realized it's not going to happen, so they decided to build communism in one country. Then they realized that it's not going to happen all over the world, so they decided to make communism in one country. तो जब उन्होंने देख लिया कि ये पूरे विश्व में हम ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने निर्णय लिया कि कम से कम अपने देश में उसे ला सकते हैं। Then they realized that it's not going to happen in one country, so they decided to make communism for one man who is the general secretary of Communist Party. So he only फिर उन्होंने देखा कि पूरे देश में नहीं ला सकते, तो वो एक आदमी के लिए केवल कम्युनिज्म। So if it's not possible for Satya Yuga for the whole world or for the whole country, just make it for yourself. No problem. पूरे विश्व में आप सत्युग नहीं ला सकते, तो अपने जीवन में अवश्य ला सकते हैं। Yes. Maharaj, you said that one should not get attached to the material things. So, is it applicable on the family members also? They should get attached to the family members or not? Srila, you want to translate it? माता जी का प्रश्न था कि महाराज कह रहे थे कि हमको भौतिक चीजों से आसक्त नहीं होना चाहिए। माता जी कि ये हमारे परिवार के सदस्य, क्या उनसे भी आसक्ति न रखें हम? Am I right? Just want to say it in Hindi, but anyway. Srila Prabhupada says in Bhagavad Gita that attachment to family members is a natural thing. It's swabhavik se. प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता में कि अपने परिवार के सदस्यों से आसक्ति रखना एक स्वाभाविक स्थिति। It's not possible to live with the members of our family and be completely detached. It will be crazy. ये संभव नहीं है कि हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ रह करके और हम विरक्त रहें उनसे, ये पागलपन है। The mother is naturally attached to a son, right, or to children. How mother cannot be attached to children? एक माँ अपने बच्चों से कैसे आसक्ति नहीं रख सकती है? Because between husband and wife, it's questionable. पति और पत्नी के बीच में ये प्रश्न उठ सकता है। But at least for children, the attachment is there. लेकिन बच्चों के साथ तो आसक्ति होगी। But at the same time, we have to really clearly understand that ultimately all these children, they are sent to us by God. लेकिन हमको ये समझना होगा ये बच्चे भी भगवान की तरफ से भेजे गए हैं हमारे पास। And our duty is to take care of them because they are sent to us by God. तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनका पालन पोषण करें जो भगवान उनको भेजा हमारे पास। And we try to be attached to them as parts and parcels of God. तो हम उनसे अपने बच्चों से आसक्त इस विचार से हम रख सकते हैं कि वो भगवान के ही अंश हैं। It's like Queen Kunti, she prays about this in the first canto of Srimad Bhagavatam. जैसे महारानी कुंती भागवत में वो प्रार्थना कर रही है। She says, "Oh my Lord, please break my attachment to Pandavas and Yadavas." वो भगवान से मांग रही है कि हे भगवान कि आप मेरे पांडवों के साथ जो मेरी आसक्ति है उसको तोड़ दें। Pandavas are her sons, and Yadavas are her relatives from her father's line, from her family line. सॉरी कुंती महारानी पांडव और यादव दोनों से,
तो आप पांडव आपके घर के पुत्र हैं, प्रिय हैं, जो संतान हैं, और But Srila Prabhupada explains in the purport to this verse, to this prayer of King Kunti, that she's not praying to be detached from Pandavas and Yadavas. She's not praying to be not attached to them. प्रभुपाद समझाते हैं कि एक महारानी कुंती जो है ये प्रार्थना नहीं कर रही कि वो आसक्त ना हो पांडवों से. She's praying that her main attachment would be to Krishna, and then her attachment to the Pandavas and Yadavas would be through Krishna. Not outside of Krishna, but through Krishna. उनकी प्रार्थना है कि मेरी आसक्ति कृष्ण से हो और कृष्ण के बाद कृष्ण के माध्यम से दूसरों से आसक्ति हो. If I'm attached to somebody just directly to him, it will be very difficult. अगर मैं किसी के साथ डायरेक्ट आसक्ति रखता हूँ तो बहुत मुश्किल है. Because this attachment will bring me happiness, and the same attachment will bring me a lot of miseries, a lot of suffering. इस प्रकार की आसक्ति से हमें सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा. But if I'm attached to somebody, and not just directly, but through Krishna, and I invite Krishna as the third party to our relationship, then the attachment will not be cause of miseries. हमारी वो आसक्ति दुख हमको नहीं ला सकती अगर वो आसक्ति कृष्ण के माध्यम से हो और कृष्ण को बीच में रख करके एक थर्ड पर्सन. It will bring you a lot of happiness. So be attached, but with Krishna and through Krishna. Okay? आपको बहुत खुशी मिलेगी तो आप आसक्त रहें, लेकिन कृष्ण के माध्यम से कृष्ण के साथ. And if you forget Krishna by being attached to somebody, it will not bring happiness to him, it will not bring happiness to you, and it will not bring happiness to Krishna. लेकिन कृष्ण को हटा करके आप आसक्त रखेंगे तो ना आप खुश रहेंगे, ना आपके रिश्तेदार खुश रहेंगे, ना ही कृष्ण खुश रहेंगे. हरे कृष्णा. The time is up actually. भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद महाराज. Thank you very much.